ठीक है, तो आपका नाक में ना बेसिक जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे फैला हुआ है, यहाँ पे सपोर्ट नहीं है और लंबा है। तो ये लंबाई को थोड़ा कम करना है। ये जो मोटा है इसको कम होगा और जो टिप बिल्कुल सपोर्ट नहीं है ये ऊपर उठ के आएगा। तो ये सब बोलते हैं रिकंस्ट्रक्टिव राइनोप्लास्टी। इसके लिए भी रिब का भी हार्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको 12 दिन मिनिमम लग जाएंगे, ठीक है ना। So we're planning to do a cosmetic nose job for this pretty girl. You can see the nose, there is a deviation, she has slight issues with breathing, no tip support, a lot of issues with the septum, planning septal reconstruction. It's going to be open structure rhinoplasty, we're harvesting rib. Intention is to reduce this length, narrow it down, make it straight, get the tip, lift it up. All of that in one go. It's probably going to take me 2.5 hours, 2 to 2.5 hours. Thank you. Patient's nose before we did a cosmetic rhinoplasty. Observe very carefully, it's too long and it's too flat, it's kind of buried, and that's what we had immediately after surgery. So you can see the nice tip, good projection, work done on the radix. I'm going to show you both the views one time together. I'm going to show you this pre-op. This is the post-op. We also had to harvest rib, a lot of work on the tip, work on the dorsums, work on the radix. And now I'm going to show you the front view. We can see that again. The lip also, observe carefully how the lip is right now. And this is the correction with the lip, with the tip, with the nose, length reduced, tip defined, radix created, osteotomy is done, various grafts used. Tomorrow morning we'll remove this nasal pack. Okay. Okay? Right. Pain and all? Reduced a little bit. Okay, fine. So he'll discharge you on Monday. Okay. Okay, Monday morning. And tomorrow I won't be getting this. Tomorrow, no, Sundays, right? The discharge staff won't be there. All the staff won't be there. Monday morning. Monday morning. Monday morning. क्योंकि वो 5 days तो उन लोग का हो गया ना कल. कल 5 days हो जाएगा आपका. हाँ. रुक सकते हो, वैसे नहीं कि आपको जाना है. नहीं 5 days 19 को ऑपरेशन हुआ तो 20 को रूम में शिफ्ट किया. हाँ. अरे देखिए 5 days. टुमारो 5 days हो जाएगा आपका. यूजुअली क्या है कि 5th day डिस्चार्ज करते हैं. कल संडे इसके लिए नहीं डिस्चार्ज करेंगे, मंडे मॉर्निंग करेंगे आपको. तो और 5 days रुकना है आपको. और 5 days. ऐसा टिकट है मेरा. हाँ 29th मॉर्निंग करेंगे ये रिमूवल. आप भी देख लीजिए. सूजन है अभी और मैं आपको दिखा देता हूँ उसमें क्या क्या है. देखो यहाँ पे थोड़ा सूजन है तो ये सेटल होगा. ये देखिए आपका जो टिप है उठा हुआ है. साइड व्यू देखो, यहाँ दबा, जब दबा जाएगा. देखिए अभी इसमें साइड व्यू देखिए, मिरर में देखिए आप दोनों, वो साइड देखिए. हाँ तो क्या क्या किया है देखो. ऐसे यहाँ का हड्डी में कम किया है मैंने. ये हड्डी जो आगे आया था इसको पीछे ले गए और साथ में टिप लाए. तो हड्डी और ये टिप जो कार्टिलेज का वर्क है. और पहले से देखो पूरा स्ट्रेट लाइन में था, अब स्ट्रेट लाइन में नहीं है. ऐसे जाके यहाँ से स्टार्ट हो रही है. दिख रहा है ना, ये मेन है. अब फ्रंट व्यू देखो, इसमें तो इसमें डिप हुआ है, कॉलिबुला हुआ है और साइड ये हुआ है. साइड में मैंने आपको कट नहीं किया, जरूरत नहीं था. अब आपको मैं एक टेप लगा रहा हूँ. फोटो उठता साइड लेके, फोटो एडिट जो आप अनपर नंबर Revisit you. Okay. Thank you. Thank you so much.